Good morning. I am Anil Agrawal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So this channel has lot of banking, finance, economics videos, and this is an ocean of knowledge. So we try to tackle all latest news in economics or economy that may affect banking or overall impact on country. Now the latest event is imposition of 50% tariff by US on Indian exports to US, and what can be the likely effect on banking and our economy and our employment. We will try to discuss. The views may vary, but I am only discussing as per my experience and knowledge of economics. Now, total export to US is $77.5 billion. It translates into Indian rupees 6,78,280 crores. Or we can say, if we convert it into Delhi figure, it is around 1,858 crore Delhi. And when exports are impacted means are reduced. That means it has a cascading effect on the economy of a country that is exporter. As far as import country is concerned, they are also affected because their consumers have to pay higher price for the goods they are already consumed. But they can replace these goods from import from other countries if those goods are available cheaper than the goods from a particular country. So at present, we are not too much concerned how American consumer will be affected by this. Our worry should be what will be impact on our economy, our banking sector, and on employment. The best situation is no such restrictions. If exports are growing, it is boosting so many things in economy. But we are forced in a situation that is to be tackled. In that, what are the likely scenarios that we will try to discuss? First thing, if export shrinks, naturally the manufacturing in that sectors like textile, jewelry, and those items where these high tariffs will have a real impact, the production may affect, maybe temporarily, maybe on permanent basis. Because the moment orders shrinks, naturally the manufacturer will not manufacture the items because in exports most of the items are manufactured based on the specification in a order. The moment that order goes away, it has immediate impact on production lines. And if production lines are stopped or reduced, it has cascading effect on the workers, those are working there. It has a cascading effect on all those people, those are directly or indirectly related to those factories. Maybe raw material supplier, maybe transporter, maybe laborer. So when you are getting lesser export order, so naturally the amount that you are realizing out of export proceeds are being distributed to so many people in the country. And the moment that dries up, naturally the income of all these people will be directly or indirectly affected. So that is one negative impact in shrinkage of export to a particular country, because immediately these sort of people, those are directly related to manufacturing of these items, will be immediately impacted. Others may be impacted later on. Similarly, the banks may also be impacted, that their demand for export loan will decline to that extent. If export is not there, export loans will also fall.
than the income that they were getting by conversion of foreign currency into Indian rupee. That foreign exchange earning, foreign exchange reserves, that will also fall. And the wealth that is flowing into the country will start reducing by the matching amount, say around 1,858 crore per day. Because when we produce something and sell something, that money is flowing in the hands of various people in economy. So that is the impact. Now the question is, what is the remedy? They have imposed it. We have to face it. So what country can do is to look for alternate markets. Look for alternate markets. That means if US is not taking that product, if we can sell in other countries, naturally the damage can be reduced to that extent. But that may take time. Penetrating into other markets where tariffs are low may take its own time. So the pain may increase over period of time and pain may reduce over period of time. Second best scenario is they withdraw these tariffs, some truce comes, and ultimately the normalcy comes. That is second situation for which a country normally awaits. Sometime some measures are temporary in nature. They may not last long because that is not only affecting India, that is also affecting the consumers in their country. So that is the second thing. Third is the production of these units, those are engaged in exports. These productions are consumed locally so that at least the production lines are running. The people, those are engaged in production, they are not becoming jobless. So that can be another effort. And now country is moving towards that buy more Indian goods. But that will only succeed if the matching income is also increasing in the hands of citizens or nationals. If income is not increasing, despite love for country, the people may not be able to buy those goods. So the real effort on the part of government will come how to boost income of individuals in the country, how to provide employment, and how to take care of the unemployment that may come into being due to shrinkage of exports. So these are all challenges. So the coming months are very, very challenging for the country, for the banking system, and for the money market, and it will have a ripple effect or cascading effect, and we have to wait for real data to emerge how our country is able to accept this shock and bear this shock. But definitely some damage will happen and there will be effort to minimize this effect of damage by all concerned authorities. So moment we get more data and more information on this subject, I will share with this. The entire video is academic in nature. The purpose is to give you facts and figures to help you to answer such questions in your forthcoming interviews. गॉड ब्लेस यू ऑल. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. यूएस ने इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे टैरिफ लगाए, इसका क्या प्रभाव होगा? इसका प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या होगा, बैंकिंग पे क्या होगा और आम व्यक्ति पर क्या होगा, ये हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे इस वीडियो में. और जो इस वीडियो में विचार है वो मैंने अपने एक्सपीरियंस और अपनी इकोनॉमी के समझ के अनुसार बनाए हैं. काफ़ी लोगों के विचार डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है. मकसद सिर्फ एकेडमिक है. मकसद है कि अगर इंटरव्यूज़ में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें कुछ इसकी बैकग्राउंड पता होना चाहिए. सबसे पहले हमें ये समझना है आज की तिथि में यूएस के साथ हमारा एक्सपोर्ट का क्वांटम क्या है. ये बहुत अधिक है. यूएस डॉलर 77.5 बिलियंस. अगर हम इसको भारतीय रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग ये 6,78,280 करोड़ है.
यानी कि लगभग 1858 करोड़ प्रतिदिन। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, और जब ये आंकड़ा श्रिंक होगा या इस पे प्रभाव पड़ेगा तो लगभग पूरी अर्थव्यवस्था पे विभिन्न प्रभाव इसके पड़ सकते हैं। पहला प्रभाव तो इमीडिएट है, कुछ शॉर्ट टर्म प्रभाव पड़ सकते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म प्रभाव पड़ सकते हैं। शॉर्ट टर्म प्रभाव क्या हो सकता है? जिन भी गुड्स की एक्सपोर्ट इमीडिएटली रिड्यूस हो जाएगी या बंद हो जाएगी, वहाँ पर प्रोडक्शन लाइंस बंद हो सकती हैं, क्योंकि जो वहाँ पर इंपोर्ट कर रहा था वो इमीडिएटली एक्सपोर्ट ऑर्डर देना बंद कर देगा। जब एक्सपोर्ट ऑर्डर आने बंद हो जाएंगे तो नेचुरल है जो एक्सपोर्टर है, जो उसके स्पेसिफिकेशन के अनुसार गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, उसको अपनी प्रोडक्शन रोकनी पड़ेगी या डिले करनी पड़ेगी। जैसे ही प्रोडक्शन डिले होगी या रुकेगी, नेचुरल है जो उस फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी हैं उन पर असर पड़ेगा, जो उस फैक्ट्री को रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले लोग हैं उस पर असर पड़ेगा, जो ट्रांसपोर्टर्स या लेबरर या अदर लोग, एंसिलरी लोग उस एक्टिविटी के साथ जुड़े हैं, उस पर असर पड़ेगा। बैंकों को, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं मिल रहा एक्सपोर्टर को, तो एक्सपोर्ट क्रेडिट फाइनेंस नहीं हो पाएगा। एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं होगा, डॉलर्स नहीं आएंगे, तो जो डॉलर की कन्वर्जन से इनकम आती है बैंकों को, उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तो ये सारे प्रभाव इमीडिएट हो सकते हैं, ये शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। तो इसका प्रभाव एम्प्लॉयमेंट पे भी पड़ सकता है, इसका प्रभाव ओवरऑल जो मनी कंट्री में आ रही है उस पर भी पड़ सकता है, क्योंकि जो भी पैसा देश में आता है तो नेचुरल है जो एक्सपोर्ट होगा, मान लो 6,78,280 करोड़ का, तो उससे जो एक्सपोर्ट रिलाइजेशन हो रही है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है डिफरेंट लोगों को। जो रॉ मटेरियल बना रहे हैं उन लोगों को मिल रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनको वेजेस मिल रही है, जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है उसको मिल रहा है, जो इन बिल्स पर डील कर रहा है उनको कमीशंस मिल रही हैं। और इस तरह से जो ये पैसा है वो विभिन्न लोगों के बीच में बट रहा है, और जब वो बट रहा है तो वो इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए कोई भी श्रिंकेज अगर इकोनॉमी में होती है, चाहे एक्सपोर्ट की होती है चाहे इंपोर्ट की होती है, उसका तत्कालिक इफेक्ट होता ही है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। मगर क्योंकि ये एक ऐसा डिसीजन है जो दूसरे कंट्री ने लिया है, उनके कंज्यूमर्स पर भी असर पड़ेगा, मगर हमें उसकी इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो हमारा माल ना खरीदे, किसी और कंट्री का माल खरीदना शुरू कर दें। हमें चिंता है कि जो हमारा माल जा रहा था, जब वो नहीं जाएगा, उसका हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारी नौकरी पे, या हमें क्या इमीडिएट असर होगा या आने वाले वक्त पे असर होगा। तो इमीडिएट असर तो नेचुरली होगा। अब इसका रास्ता क्या है, इससे कैसे टैकल किया जाए? अब एक टैकल तो ये है कि ये जो गुड्स बनाई जा रही थी इसके लिए अल्टरनेट मार्केट्स को तलाशा जाए, और कौन से कंट्रीज हैं जो इन गुड्स को कंज्यूम कर सकते हैं और वहाँ पर एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए। एक रास्ता तो ये हो सकता है। दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि ये जो गुड्स बन रही हैं उसके कंज्यूमर देश में ही ढूंढे जाएं, और देश के लोग उसको अधिक से अधिक कंज्यूम करें। और वो डिपेंड करेगा कि क्या लोगों की वेजेस या इनकम उतनी बढ़ गई है कि वो इन एडिशनल गुड्स को कंज्यूम कर सकें, जो कहने में आसान और सच्चाई में काफ़ी कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि जो इनकम लेवल्स हैं वो इस चीज़ से बढ़ने की बजाय घट भी सकते हैं, क्योंकि जो लोग डायरेक्टली एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व थे उनकी वेजेस घट जाएंगी, जो लोग डायरेक्टली एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व थे उनकी इनकम्स घट जाएंगी। तो वो जो सेगमेंट है वहाँ पर जो इनकम की श्रिंकेज होगी वो ओवरऑल इकोनॉमी की श्रिंकेज में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसी तरह जीडीपी पर भी उसका असर होगा, क्योंकि जब प्रोडक्शन कम होगी तो नेचुरल है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर असर आएगा। तो अभी ये बहुत जल्दी है कि ओवरऑल इसके क्या नतीजे होंगे, पर इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो इसीलिए इसके रेमेडियल मेजर अभी से चुनने होंगे, और प्रोएक्टिवली पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए कि ये जो टैरिफ्स है ये हट ही जाएं। किसी तरीके से यूएस या तो पीछे जाए या इंडियन गवर्नमेंट डिप्लोमेटिक वे से इसके ऊपर कोई सलूशन निकाले, क्योंकि
यूएस एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो इसका प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर हो सकता है। इसको तो ये और जो जो बातें पता लगेंगी वो हम डिस्कस करेंगे। बैंकिंग पर डायरेक्ट प्रभाव तो एकदम नहीं आएगा, पर इनडायरेक्ट प्रभाव ये है कि जो एक्सपोर्ट क्रेडिट गिर सकते हैं, एक्सपोर्ट से जो इनकम आ रही थी वो गिर सकते हैं। अगर इनकम फ्लो नहीं होगी लोगों की तो सेविंग्स पे भी कुछ असर आ सकता है। पर यह अभी बहुत जल्दी है इसकी इन नतीजों पे पहुंचना। पर जैसे जैसे दिन बीतेंगे, वक्त बीतेगा और रियल लाइफ सिचुएशन सामने आएंगी, वैसे वैसे इकोनॉमी की ज़्यादा क्लैरिटी इस स्टेप से पता लगेगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।